Hi guys, I'm Manisha. Welcome back to my channel, and today's video is all about the look which you can see right now. So I have created this look using all the Lakme products. So if you want to know how I've done this, please stay tuned, and now let's get into the video. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि मैंने अपने फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है बाय यूजिंग दिस फेस वॉश है, ये एरियस का है एंड इट्स वेरी गुड, वेरी वंडरफुल। और मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ अपने चैनल पे, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप अगर नहीं देखे हो, अगर आप नए हो मेरे चैनल में, तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिएगा। नाउ दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। मैं ज़्यादा डीप नहीं चाहती हूँ इसके बारे में, बट या दिस फॉर ऑल स्किन टाइप एंड ये बहुत अच्छे से आपके स्किन को डीप क्लींजिंग करता है। एंड मैंने पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर लिया है। तो मैंने ये 2 स्टेप पहले से कर लिया है ऑफ कैमरा, तो मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखाऊंगी। सो विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द प्राइमर एंड द नेक्स्ट स्टेप्स फर्दर। So yeah, stay tuned. Now for primer, I'm using this Lakme Absolute Blur Perfect Primer. Now this is a mattifying primer, but it suits like all skin type. And if you're a beginner and want to try a primer, then आप definitely इसको ले सकते हैं because it comes in 2 sizes. Moving on to the foundation, I'm using this Lakme 925 Primer Plus Matte Perfect Cover Foundation. It comes with a spatula. I'm using this foundation for the first time, and then I'll take this blender which is from Color Bar और मैं इसको बहुत अच्छे से blend कर लूँगी। एंड ये blender बहुत अच्छा है बिकॉज ये बहुत seamlessly blend हो रहा है। ये फाउंडेशन मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं ये फुल कवरेज तो नहीं देता है, इट्स अ लाइक मीडियम कवरेज, काइंड ऑफ शेयर टू मीडियम कवरेज, बिकॉज मेरे कुछ स्पॉट्स थे तो वो अभी भी दिख रहे हैं, शायद आप देख सकते हो, पता नहीं कैमरा में पता चल रहा है कि नहीं, बट या उस तरीके से कवर नहीं किया है। एंड लैक्मे का मैं ये यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर। सेम फाउंडेशन को मैं एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो ज़्यादा कवरेज के लिए आप इसको और एक लेयर भी कर सकते हैं, बट मैंने एक ही किया है तो क्योंकि मैं इसको एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। So I have concealed the usual areas, that is the corner of my eyes, the bridge of my nose, my cupid bows, the center of my forehead, और मैं वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ। Now for my compact, I be using this Lakme का Sun Expert Compact which has SPF 40 and it is a matte compact, और मैं अपने कंसील एरियाज को अच्छे से पैक कर लूँगी। Now I have done the eyebrows off camera, और अभी मैं जो स्टेप करती हूँ to conceal my extra hairs underneath my brow bone, तो मैं वो कर रही हूँ and I'm concealing it with the same foundation from Lakme which I have used, and then जो excess powder था मेरे face पे मैं उसको dust off कर दे रही हूँ with the help of this fluffy brush. Now moving closer to the eyes, I'll be concealing my eyes and I'm using the same foundation from Lakme, और मैं अच्छे से उसको cover कर लूँगी so that there is no discoloration. And after that I'll set the eyes with the compact. Now for eyeshadow, I'm taking this Lakme Absolute Infinity Pink Paradise palette, and this is a very colorful palette with pinks and greens. I'm taking this pink shade from the palette, dusting off the excess, and I'm applying it over to my crease. Now these colors are supremely pigmented. Also, I'll apply the eyeshadow on the outer corner and the inner corner of my eyes, and I'll just join it with my crease. I'll create a little wing with this brush, and I'll do the same for both the eyes. And now जो middle वाला area था, the lid area, I'll apply a concealer with the angular brush, and मैं crease तक उसको लेके जाऊँगी। Now I'm taking this light pink shade from the palette, और मैं crease के ऊपर वाले shade को define करते हुए लगा लूँगी। And then I'm taking this very light pink, pastel pink shade from the palette, and जहाँ पे मैंने वो concealer लगाया मैं उसको वहाँ लगा दूँगी। And then I'm again taking this pink color, and एक छोटा स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश लेके मैं अच्छे से कलर्स को ब्लेंड कर दूँगी so that it all looks together. Now these colors are so pigmented and it was very easy to work with these colors. अब मैं वही पिंक शेड लेके अपने आँखों के नीचे भी उसको लगा लूँगी, and I'll join it with the upper eyeshadow. And then I'll take this brown shade from the palette, और मैं उसको हल्के से अपने पिंक eyeshadow के ऊपर on the lower lash line में लगा लूँगी. And now I'm taking this black Insta liner from Lakme, and I'm creating a very fine line, very thin line just above my upper lash line, and then I'm using just 1 coat of mascara because I'll be using falsies today, which I've done off camera. And then for blush I'm using the Lakme 925 blush. तो बीच में मैं एक स्टेप करना भूल गई थी, जो कि मैं अपने आई शैडो को बहुत ही कट
दिखाने के लिए, बहुत एक फ़ाइन दिखाने के लिए मैं कंसीलर से करती हूँ. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक मेंशन कर दूँगी. एंड नाउ फ्रॉम द सेम आई शेडो पैलेट मैं पिंक शेड को लेके एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे वो ब्लश का कलर काफ़ी रेड लग रहा था, तो आई एम यूजिंग दिस पिंक वन. एंड देन आई एम टेकिंग दिस लैक्मे का शेयर हाईलाइटर. आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ हाईलाइटर. तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज़ एंड ऑल्सो माई क्यूपिड बोज टू हाईलाइट these features. For my lips I'll be using this Lakme Absolute Matte Lip color. Now this is a beautiful pink color. All the product links will be given in the description box below, so do check it. And this is a beautiful matte lip shade. And then I'll be wearing the earrings from Rubans, which I've ordered from Myntra. So I'll just get back to you. So this is the final look which I have for you guys. So I enjoyed a lot creating this look because जो products Lakme के थे वो बहुत ही अच्छे थे, especially the eyeshadow palette. So if you're looking for a good colorful eyeshadow palette, then you must go for this one. And also do mention on the comments below how do you like this look on me, and do not forget to give this video a thumbs up. I'll see you guys in my next video very soon. Till then, bye, take care.